Welcome to Vanik smart class for A.S.O examination. Welcome again to this class. Polity, Indian polity memory based question answer discussion. Okay. So last class we have left some questions. जोटा आम छाड़ी से देखा डायरेक्ट क्वेश्चन को जीवा आम क्वेश्चन बेस्ड बेसी करिया फोकस करिया क्वेश्चन बेस्ड. Okay, so we should start the discussion. How many schedules were there in the constitution originally? That is easy question for all of you. 8 schedules are there. Now there are 12 schedules. National emergency is declared on the following grounds except war, external aggression, internal disturbance is not a ground. It has been deleted. It has been deleted by which amendment? By 44th Amendment Act 1978 रे सेटा को डिलीट कराई की ता जगह रे आर्म्ड रेबेलियन लिखाई थला. ठीक अछि. नेक्स्ट 47. President rule is imposed under the provision enumerated under Article 356. So all of you are conversant. Very easy questions. Okay, B. Now 48. The National Civil Service Day is observed on. I am but फिर भी National Civil Service Day is observed on April 21 because on this day Sardar Patel addressed the first batch of IS officers. ठीक है, तो April 21. Who among the following is the sole authority to bring amendments in the Constitution? संविधान रे amendment आनिया पई कहा को power दिया जाए. That is Parliament of India. Parliament रे जहाँ भी संविधान amendment हबो गोटे constitutional amendment bill गठन करा जीवो एवं बिल तैयारी करा जीवो तापरे ता थ्रू रे अमेंडमेंट हबो. दीटा उपाय हुए स्पेशल मेजॉरिटी और सिंपल मेजॉरिटी वे भी हुए. एटा हम डिस्कशन करी. 40-50. Which of the following articles has remained inoperative since the inception of the Constitution of India? Which of the following remain inoperative means has not been implemented properly? 238 को जदि हमें देखिबा 238 प्लान देखाउ ठीक से क्वेश्चन ठीक ठाक देखाउ छि नै कहबो. 238 टा अबोलिश हे जी. 250 टा होची सेंट्रल स्टेट रिलेशन. 360 टा इनऑपरेटिव मींस आइटा करा जायनी ए पर्यंत फाइनेंशियल इमरजेंसी बसिनी सेति पे त कोन कहउची इनऑपरेटिव सिंस इंसेप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन माने संविधान आरंभ रु को आर्टिकल टा कार्यकारी हेई नाही. Then question number 51. Which of the following parts deals with special provision for certain states? Special provision for certain states है XVI, XXI जोड़ा हमर कहउछ हमें कौन जोड़ा कहउथली जम्मू एंड काश्मीर आउ जो रही हमर 371 रे महाराष्ट्र गुजरात एंती बहुत सारा स्टेट अछंती. 371F रे सिक्किम अच्छी. 371 ए रे नागालैंड अच्छी. बी रे आसाम अच्छी. एमती सब बहुत प्रकार स्टेट अच्छे गोटे नजर करिवो से स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन स्टेट्स. देन शेड्यूल X of the Constitution deals with anti-defection laws. There are several laws anti-defection laws. Suppose जदि गोटे व्यक्ति गोटे MP किंबा MLA जदि पद तार इलेक्शन पर आउ गोटे दल को जॉइन कला बा आउ गोटे दल को शिफ्ट करिगला जो दल रु जीति थिबो ता दल को छाड़ी के आउ गोटे दल को गला ताल ताकू डिफेक्शन लॉ रे बाहर कर दिया जीवो. एमती भी हुए कि जो जदि पार्टी रो व्हिप अगेंस्ट रे बा पार्टी रो ऑर्डर अगेंस्ट रे जदि गोटे मेंबर गला ताले ताकू भी बाहर कर दिया जीवो. एवं जदि गोटे इंडिपेंडेंट मेंबर जॉइन से पॉलिटिकल पार्टी आफ्टर बीइंग इलेक्टेड इंडिपेंडेंट सेटा भी गोटे डिफेक्शन ग्राउंड रे आसीबो. बट डिफेक्शन ग्राउंड रे किए डिस्क्वालिफाई करे कह. डिफेक्शन ग्राउंड रे स्पीकर बा प्रिजाइडिंग ऑफिसर डिफेक्शन ग्राउंड रे करंती. इलेक्शन कमिशन करेनी. प्रिजाइडिंग ऑफिसर लोकसभा स्पीकर और राज्यसभा चेयरपर्सन
बाठी विधानसभा रे भी सही नियम अच्छे स्पीकर डिस्क्वालीफाई करेंगे ना विधान परिषद रे चेयरमैन डिस्क्वालीफाई करेंगे सो एंटी डिफेक्शन लॉ 10 शेड्यूल नहीं कि तो 50 मु तुम कमेंट देखि पन्नी देखि दउची रा कमेंट कोन सब कहिछो हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर देयर इन 12 शेड्यूल 12 माने पंचायत राज रे ए म्युनिसिपलिटी रे केतेटा सब्जेक्ट अछि देयर आर 18 सब्जेक्ट्स जोटा हमें म्युनिसिपलिटी लिस्ट बोली कहूचे Who was the Prime Minister of India when Schedule X was added to the Constitution? Rajiv Gandhi was the Prime Minister in 1985 रे जेते बड़े 10 Schedule add हला anti defection law सेते बड़े राजीव गांधी Prime Minister which is not a special feature of Indian Constitution एटा बहुत इजी अछि inverse adult franchise गोटे special feature single citizenship गोटे special feature residuary power with states is it is not a special feature so answer is C our answer is B our answer A which of the article of constitution describes India that is Bharata as a union of states that is article 1D so kindly take a notice of this Yes, good, Satish. Good afternoon. Okay. So is it being helpful to all of you? Polity questions helpful or not? 58. Which among the following articles empowers the parliament to admit or establish new states? Admit or establish. Admit or establish जदि term थी वो तो article 2 है वो. Formation of state थिले 3 है वो. नहीं कि जो वर्डिंग पूरा डिफरेंट एडमिशन और जदि एस्टाब्लिशमेंट जदि क्वेश्चन थिबो ताले आंसर 2 हबो एडमिशन एंड एस्टाब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स त माने गोटे एरिया जोटा स्टेट नथिबो ताकू जदि पार्लियामेंट एक्सेप्ट करी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ताकू एक्वायर करी कि गोटे स्टेट स्टेटस देला ताले सेटा आर्टिकल 2 अंडर रे हबो कि जदि फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट गोटे एग्जिस्टिंग स्टेट को बाइफरकेट करा हबो बा कोन भी करा हबो सेटा आर्टिकल 3 अंडर हबो तो आंसर 2 Which of the following is authorizes the parliament to do under article 3 of the constitution? Article 3 under a con authorize कराइछ. Formation of new state by separating or uniting two more states सेटा कराइछ. Increase or diminish the area of a state सेटा भी करा जाई परिबो. Alter the name of any state, alter the boundaries of any state सेटा भी कराबो. All of these can be done under article 3. नहीं कि article 3 टा major article reorganization of states India रे states अछंती union territory भी अछंती state पई article 3 अछि अन्य जिंस पई अन्य सब union territory हला कि अन्य एरिया पे article 2 अछि तो सेटा D which of the following article provides that the changes made in the constitution through article 2 and 3 are not constitutional amendment under article 368 आर्टिकल 2 और 3 रे अंडर जो चेंज हुए संविधान जो नुआ स्टेट तैयारी हबो बा कोन भी हबो से जोटा परिवर्तन हुए ना शेड्यूल 1 और शेड्यूल 4 परिवर्तन हुए सेटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नुहे अंडर आर्टिकल 368 अंडर सेटा नुहे ता अर्थ स्पेशल मेजॉरिटी करा जायनी सेटा सिंपल मेजॉरिटी करा जाय एई कथाटा आर्टिकल 4 रे कहैछ तो आर्टिकल 4 स्टेट्स that is your the amendments made by article 2 and 3 are not constitutional amendment under article 368 okay kindly take a note of this now at question number 61 Which among the following was the first committee or commission appointed by Government of India for reorganization of states? Reorganization ପାଇଁ ପ୍ରଥମ କମିଟି ବସିଥିଲା S.K. ଧର କମିଟି. S.K. ଧର କମିଟି आंसर A हबो S.K. धर कमिटी. S.K. धर कमिटी was appointed later JVP then Fazal in 1953. So say question answer हला A 61. 62. Which among the following statement is not correct? The State Reorganization Committee was set up in 1953. ठीक अच्छी State Reorganization Committee was a 3-member committee.
It had Justice Fazal Ali as the chairman, H.N. Kunjru, K.M. Panikar, they were also the members, and it was constituted in 1953. Yes, 53. That is correct. The first linguistic state of Andhra Pradesh was set up in 1952. That is wrong. It is 53. And the answer of Goa became the 25th state of Indian Union in 1987. Andhra Pradesh was carved out of erstwhile state of Madras. That is correct. That is answer of B. Then consider the following statement. Territory of India is larger than Union of India. ठीक अच्छे यूनियन ऑफ इंडिया कहले आम स्टेट रो टेरिटोरी को बुझा मुझे कि इंडिया रे टेरिटोरी स्टेट भी अच्छी और यूनियन टेरिटोरी भी अच्छा यूनियन टेरिटोरी द्वारा ये लक्षद्वीप है अंडमान निकोबर है तो एगुरा सब स्टेट भी अच्छा स्टेट केरला है आंध्र प्रदेश है ओडिशा है एगुरा सब अच्छा महाराष्ट्र है तो यूनियन ऑफ इंडिया कहले स्टेट को बुझाए आउ अन्य जो अंचल रहा केन्द्र शासित अंचल बा किसी एक्वायर टेरिटोरी भी इंडिया अंडर अच्छी तो सेगुरा सब यूनियन ऑफ इंडिया अंडर जाऊनी तेणु से टेरिटोरी ऑफ इंडिया कहले समस्त भौगोलिक सीमारेखा एवं यूनियन ऑफ इंडिया कहले केवल राज्य मानकर भौगोलिक सीमारेखा से टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज लार्जर देन यूनियन ऑफ इंडिया से ठीक अच्छी द यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरी एटा भूल अच्छी यूनियन ऑफ इंडिया कंसिस्ट ओनली स्टेट्स तेणु ओनली वन इज करेक्ट ए ओके Good evening, Vishwaranjan. Okay. So that is the things. Then we shall move to 64. Who among the following was not included in the JVP committee? जो JVP committee 1948 रे last आडू तैयारी कराइतला सेतिरे किए नथिले बेली से कहूची जवाहरलाल नेहरू थिले वल्लभ भाई पटेल थिले पट्टाभी सीतारामय्य थिले वीडी सावरकर नथिले आंसर बी हु अमंग द फॉलोइंग इज आर द मेंबर्स ऑफ फजल अली कमिशन जोटा एबे कहउतली फजल अली केएम पानिकर एचएन कुंजरू ऑल ऑफ दिस डी अच्छा इटा ला बी और डी आंसर 65 डी ठीक अछि एनी दिक्कत क्वेश्चन देखा जाउची ठीक भाबरे सब please give your comments, please give your view. I shall be reading that. Which among the following is incorrectly matched? Arunachal Pradesh and Mizoram originally known as NEFA, North Eastern Frontier Agency, but NEFA ताको हमें कहूचे NEFA कहूचे ताको NEFA NEFA सेमन को ना थला NEFA ब्रिटिश समय रे ता ठीक अछि मेघालय ऑटोनोमस स्टेट और सब स्टेट ऑफ आसाम थिला सेइटु से बाहर छी मेघालय मणिपुर एसोसिएट स्टेट नथिला सेटा गोटे यूनियन टेरिटरी थिला यूटी थिला तनो एटा आंसर ऑफ सी सिक्किम वाज ए प्रोटेक्टोरेट स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन इन 1947 रे गोटे प्रोटेक्टोरेट स्टेट थिला प्रोटेक्टोरेट स्टेट माने इंडियन आर्मी अंडर रे ताकु रखा जाइतिला ब्रिटिश ताकु रखि कि जाइतिले सिक्किम तनो एटा आंसर सी ठीक अछि Which among the following true about acquired territories? True. So it is untrue hobo, not true. It is not true. Call it ठीक hobo, not true. So it is not true. Call hobo. Which of the following is not true about the acquired territory? Dadra Nagar Haveli was Portuguese territory. Damondi was not a Spanish territory. Rather, it was a Portuguese territory. Later, it was acceded or it was merged with India. That is in 1954 and it became a union territory in 1962. 1962 रे Goa Daman Diu became a union territory by which amendment act? को amendment act रे Goa Daman Diu union territory ले क्वेश्चन देली तको आंसर देकी पठा लेकिन Daman Diu Spanish territory एटा भूल अछि बाकी उरा ठीक अछि तो all the above बने आंसर बी हबो Daman Diu was not a Spanish territory. ठीक अच्छी
ओके पिलाने तो यहाँ हूँ 67 68 which among the following states were formerly part of Assam but got statehood later से कौन कौ स्टेट आ भितर से माने आसाम रो पार्ट थिले एवं परे स्टेट होइचंती नागालैंड मेघालय भी थिले मेघालय मिजोरम भी थिले मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नागालैंड थिले नागालैंड मेघालय मिजोरम अरुणाचल प्रदेश थिले तेन बेस्ट आंसर डी डी बेस्ट आंसर हम डी का नागालैंड 63 रे सेपरेट हला मेघालय 71 2 रे सेपरेट हला नहीं कि मिजोरम भी सेमती गोवा संगरे हला जोटा मार्क पूछ मिजोरम 1987 रे अरुणाचल प्रदेश भी से 1987 रे सेपरेट हला तो चारोटी राज्य आसाम रो आछंती से माने नागालैंड मेघालय मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश से माने पूर्वरु आसाम रो गोटे पार्ट थिले नाउ दे आर सेपरेट स्टेट्स ओके सो नाउ 69 मैच द लिस्ट रे हम देखिबा केते जो जगह जो राज्य मानकर ना चेंज होईची से कहूँ मद्रास टू तमिलनाडु जोटा है 1969 रे है ठीक अच्छी एवं मैसूर टू कर्नाटक 73 रे है ठीक अच्छी यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली कैपिटल टेरिटरी 91 रे है 92 रे इफेक्टिव है आप गोटे अमेंडमेंट भी कराई 69 अमेंडमेंट तेणु दिल्ली रो ना होची नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एनसीटी उत्तरांचल प्रदेश उत्तराखंड रे 2006 रे सेपरेट है नामकरण है उत्तराखंड तेणु 1 2 3 4 पोजिशन रे अच्छी 1 2 3 4 आंसर हम ए काइंडली टेक द नोटिस ऑफ दिस ओके ठीक अच्छे सो मत कही न पर्यंत कि गोवा डामन ड्यू को अमेंडमेंट रे यूनियन टेरिटरी है देखिए कहबनी निज मन जो थी कह ना मुझे कहीदेवी मत पचार 70 आंसर इज ए the modes of acquisition and loss of citizenship are provided in नहीं कि आसला मेथड ऑफ सिटीजनशिप जोटा आसला हमरो तो से कहूँ मेथड्स ऑफ सिटीजनशिप एक्विजिशन ऑफ लॉस ऑफ सिटीजनशिप इज प्रोवाइडेड इन सिटीजनशिप एक्ट 1955 आर कथा कौन ना जो से मेथड्स ऑफ सिटीजनशिप बा एक्विजिशन एंड लॉस ऑफ सिटीजनशिप जोटा अच्छी केमती जड़े नागरिकत्व ग्रहण करिवो केमती जड़े नागरिकत्व हरेइबो जोटा एक्विजिशन एंड लॉस कुआउची सेटा संविधान रे उल्लेख नहीं सेटा सिटीजनशिप एक्ट 1955 रे उल्लेख अछि तो सेटा सेति पे आंसर सी द प्रवासी भारतीय दिवस स्टार्टेड इन द ईयर 2003 रे आरंभ होइतला प्रवासी भारतीय दिवस प्लान में कहि रखे कि प्रवासी भारतीय दिवस को रेफर करथिला बा रेकमेंड करथिला एलएम सिंघवी कमिटी 2000 मसिया रे हितला एलएम सिंघवी कमिटी had recommended प्रवासी भारतीय दिवस बा जाको हमें एनआरआई डे कहूचे जोटा 9 जनवरी एवरी ईयर सेलिब्रेट हवा कथा एवं बेले बेले सेटा एबे बाइएनियल करा होची बोली कुआ होची 2 इयर्स रे थरे करा हबो बोली कुआ होची तो सेटा एबे चलची सेटा 2 इयर्स रे बाइएनियल फंक्शन तो सेटा जो भारत बाहर जो भारतीय वंशोद्भव लोक माने अछंती जो इंडियन नेशनल बा जो हमर पीआईओएस कौन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन बा ओसीआई ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया एनआरआई एमान को सब भारत प्रति आकृष्ट करिबा एवं तांको सहित सुसंपर्क रखिया पे गुड रिलेशनशिप बा गोटे कोडियल रिलेशनशिप एमंग देम सो दैट इन्वेस्टमेंट विल राइज एंड दे विल बी अट्रैक्टेड दे विल कम टू इंडिया टूरिस्ट रेवेन्यू विल इंक्रीज ए सब दृष्टि रखिकी वाजपेयी गवर्नमेंट ए सिस्टम आरंभ करथिले प्रवासी भारतीय दिवस 2003 रे न्यू दिल्ली रे प्रथम थर पे हितला व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द वे ऑफ एक्वायर द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कोटा गोटे वे नो रजिस्ट्रेशन गोटे वे नेचुरलाइजेशन गोटे वे इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी गोटे वे मोबिलिटी गोटे वे नो मोबिलिटी किसी मीनिंग एटी आसुनी तो रजिस्ट्रेशन थ्रू रे जने 7 वर्ष रहिला पर रजिस्ट्रेशन थ्रू रे करि परिबो नेचुरलाइजेशन भी सेमती केते 12 वर्ष अछि इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी अर्थात कोनोसी टेरिटरी जदि भारत सहित मिसी गला ताले तार थिबा लोक माने सेटार थिबा लोक माने भारतर नागरिक हेबे सेटा भी गोटे प्रोविजन अछि ता छडा बार्थ अछि डिसेंट अछि पांचटी मेथड्स अछि एक्विजिशन रो बार्थ डिसेंट रजिस्ट्रेशन नेचुरलाइजेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरीज तेनु मोबिलिटी इज नॉट ए पार्ट ऑफ दैट
एवं आउ गोटे कथा भी मुझे कहीदे कि जो मेथड्स गुरा जो देखिले बार्थ है डिसेंट है रेजिस्ट्रेशन है नेचुरलाइजेशन है इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटोरीज है से समस्ते सिटीजनशिप एक्ट 1955 रे उल्लेख अच्छा से संविधान रे उल्लेख ना दैट इज आंसर इज डी इट आंसर ए ठीक है ये भी देखीदे थ्रू व्हिच वे पर्सन हु इज मैरिड टू ए सिटीजन ऑफ इंडिया becomes the Indian citizen with residence of India for 7 years. 7 years माने registration through rasibo. Okay. So kindly take a note of this. Okay, so now question number 74. A person having distinguished service to the field of science, art, philosophy, literature, world peace becomes a citizen of India through which of the way? जेकोसी देश गोटे लोक हो जदि से साहित्य दर्शन विज्ञान विश्व शांति प्रतिष्ठा क्षेत्र में अवदान थी ताल जदि ताको भारतर नागरिक करा जाए ताल से का थ्रू रे नागरिकत्व पाइबो दैट इज नेचुरलाइजेशन तेणु एत बड़े नेचुरलाइजेशन जो कंडीशन अच्छी से अप्लाई करा जाएनी एमिनेंट लोक मान को सिटीजनशिप दियाले गवर्नमेंट चाहिए वेव अप कर पारिबो सब जिनस ताको जो 12 वर्ष अच्छी बा गोटे भाषा जानिथिबो भारतीय भाषा जानिथिबो नेचुरलाइजेशन अंडर रे कंडीशन कोन गोटे भारतीय भाषा जानिथिबो 22टा लैंग्वेज भितर जो 8 शेड्यूल लैंग्वेज भितर गोटे भाषा कहि परथिबो लिखि परथिबो एवं भारत रे आसी 12 वर्ष रहिबो जो कंडीशन अच्छी एवं गोटे पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर हेतिबो ए सब जिंस जो कंडीशन अच्छी गोटे विदेशी लोक किछि लोक आसी रहिले तो सेटा अच्छी सेटा किंतु ए जो एमिनेंट लोक माने जो माने दर्शन साहित्य विज्ञान कला क्षेत्र रे बा विश्व शांति क्षेत्र रे तांकर अवदान थिबो तांको जदि भारत सरकार चाहिला नागरिकत्व दवाई कौन से कंडीशन अप्लाई करा जीवन जमती नेल्सन मांडेला कथा में नहीं पारे नेल्सन मांडेला ब्राइट एग्जांपल थिले तो तांको संगे संगे भारतीय नागरिकत्व दिया सी आ 12 वर्ष रही कि देश नहीं कि तो सेटा सेटा से कहूँ 75 आंसर सी सो 74 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वे ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप ऑफ इंडिया दैट इज रिनंसिएशन कन्विक्शन इज नॉट ए वे कन्विक्ट हेले हुए नहीं तो इट सी एंड citizenship at the commencement of the constitution is provided under article 5 commencement of the constitution माने संविधान आरंभ होला बेले को माने नागरिकत्व पाइले से कथाटा को आर्टिकल रे उल्लेख अछि सेटा 5 रे which two category of acquiring citizenship of the person must take an oath to the constitution of India को दुई जन citizenship जो मेथड रे को मेथड रे citizenship नेले ओथ नवा पड़े दैट इज नेचुरलाइजेशन एंड रजिस्ट्रेशन सी ओके एबे तो प्राय सब रजिस्ट्रेशन हो गलानी कंपलसरी रजिस्ट्रेशन हो गलानी बट ए दी जण पे मूलरू अच्छी सो दीज आर द आंसर्स ऑफ 77 आंसर इज सी तापर हम जिबा 78 व्हिच इज द वे ऑफ लूजिंग सिटीजनशिप इन इंडिया ओके व्हिच इज द वे व्हिच इज द वे which is that देखिए क्वेश्चन टा देखे दूचे उतरे yes क्वेश्चन टा देखे दूची which is the way of losing citizenship एटा renunciation termination deprivation all of these है परिवेटा all of these D renunciation deprivation termination पिलाने deprivation है forced termination deprivation टा negative जो माने जानी न थिबो समान को पाई कहि दूची रिनंसिएशन माने निजे व्यक्ति गिव अप करिवो अर्थात जे भारतर छाड़ी के आउ को देशर नागरिक नबो से त निजे गिव अप करिवो बा निजे छाड़िवो नले तार सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो जिवो कारण हमर सिंगल सिटीजनशिप व्यवस्था अछि डेप्रिवेशन जोडा हम डिप्राइवेशन लिखुचे डिप्राइवेशन टा नेगेटिव वर्ड टा एवं सेतिरे फोर्स टर्मिनेशन ता कोंती बलपूर्वक जनकर नागरिकत्व को छड़े नि जाए सेमती किसी काम करिवो जेमती धरा जो डिसलॉयल्टी टू द कॉन्स्टिट्यूशन जदी देखैबो कि इफ इन्वॉल्वड इन अनलॉफुल कम्युनिकेशन विथ एनिमी कंट्रीज ड्यूरिंग वार टाइम रे
कि acquire citizenship by fraud means citizenship जदि fraud means रे नहीं थिबो कि naturalized citizen convicted for 2 years within 5 years of naturalization नॉले staying abroad for 7 years without any communication. So there are 5 grounds under which a person can be deprived of his or her Indian citizenship. So remember, deprivation is a negative connotation. It means forced termination. So answer is D. 78. 79. In which of the following cities the first Pravasi Bharatiya Divas was organized? That was New Delhi, I told you, in 2003. Which among the following is not a way of forced termination of India citizenship by the central government? Forced termination, जोटा मु deprivation कहूଥିଲି. A person acquires the citizenship of another country is not a forced termination. जदि आमे भारत रो लोक होई कि आमे जदर अमेरिका रो कि इंग्लैंड रो सिटीजनशिप नबा सेटा गोटे किछि असुविधा कथा नुह कि सेतरे गवर्नमेंट हमको बाध्य करिबोनी सेटा ऑटोमेटिक टर्मिनेट हे जिवो. द सिटीजनशिप obtained by fraud means गोटे forced deprivation of a person who has shown disloyalty to the constitution, deprivation of a citizen resides in the country for 7 years abroad outside India. तो इटा हबो केवल एटा हबोनी कारण एटा होची टर्मिनेशन डेप्राइवेशन नु. तो इटा ए हबो इटा बी हबो. Under which article parliament can regulate the rights of citizenship by law? Article last article जोटा में अच्छी 11 रे article 11 D. Can you take a note of this? सतीश registration रे 10 years नुह सेटा होची 7 years को जदी इन्फॉर्मेशन खराब भूल पाइथिबो but remember registration through the 7 years that has not been changed. Okay, kindly remember that 7 years registration. Okay, so article 11 under article 11, but nobody has answered my question. I told you ki under which amendment Goa and Daman Diu became a union territory. Nobody has told, nobody has answered. Under which, yes, who chaired the high level committee on Indian diaspora? Indian diaspora माने जे जो LM सिंह भी committee कहूथिली NRI day जे suggest करथिला Indian diaspora माने Indians living abroad तापर committee बसेथिला LM सिंह भी. Which of the following is incorrectly matched? 16 state Haryana हबोनी, 16 state होची हमर Nagaland, 22nd state Sikkim हबो, 25 state Goa हबो, 28 state Jharkhand हबो. तो सेटा आंसर हबो A. 1963 रे Nagaland became the 16th state of Indian Union. It was carved out of Assam. Assam रो सेटा प्रथम state to be divided, Nagaland. तो हरियाणा होची हरियाणा हमर 17 स्टेट से 1960 रे गठित होईची, पंजाब रु सेपरेट होईची. तो हरियाणा इज द 17 स्टेट, नॉट 16 स्टेट्स. So that is C and D. Okay, 83. Now 84. Oriya became Odia by which amendment? Oriya became Odia by 96 Amendment Act 2011. 95th टा बिहार रो ट्राइबल मिनिस्टर अपॉइंटमेंट को बंद करा हितला, झारखंड को दिया हितला. 93rd टा रिजर्वेशन 2003 रे हितला, रिजर्वेशन फॉर SC ST एंड OBC in higher institutions, in institution of higher learning like IIT, IMS and other privately run माने लीडिंग यूनिवर्सिटीज सबुतरे SC ST और OBC मानन पई अकॉर्डिंग टू द प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन रिजर्वेशन रहयो बोली कराइछ. 95th टा कहली ट्राइबल एरिया फॉर ट्राइबल मिनिस्टर फॉर झारखंड पई करा गला.
97 टा कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 रे ऐड कराइतला 96 टा 2011 रे ओडिया बिकेम ओडिया एटा 8 शेड्यूल चेंज हेतला बट एटी गोटे मन रखा दरकार ओडिशा बिकेम ओडिशा सेटा गोटे अमेंडमेंट हे नतला सेटा सिंपल मेजॉरिटी कराइतला सेति गोटे स्पेसिफिक अमेंडमेंट नंबर किछि नाही किंतु 96 टा केवल ओडिया बिकेम ओडिया सो देयर वाज नो स्पेशल मेजॉरिटी अमेंडमेंट फॉर चेंजिंग नेम ऑफ ओडिशा into Odisha, but there was a special majority amendment in changing Oriya into Odia. To match the following, Article 6 rights of citizenship of persons who have migrated to India from Pakistan. Yes, Article 6 re achi, right? Article 7 rights of citizenship of person returned to India from Pakistan. Seta bhi Article 7 re achi. Article 8 rights of citizenship of persons of Indian origin, jota PIO ko hauchi. Okay. Article 9 होची persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign country not to be citizen of India. Article 9 रे कहिछि जदि गोटे विदेशी लोक भारतीय लोक विदेशी सरकार विदेशी विदेश रे नागरिकत्व नेला ताले तार सिटीजनशिप एंड हे जिवो तनु 1 2 3 4 इक्वल अछि मैच द फॉलोइंग रे तनु आंसर हबो 1 2 3 4 आंसर 1 2 3 4 तमने आंसर ए. All right, now 86. So now we shall move to fundamental rights. Friend, जो PRI जो हमरा कहउछंती कोन PIO OCI और NRI PIO हले जो माने they were living in India before 1947 पूर्व जो मन रहुतले they had some lineage, they had some link with India and their ancestors were Indians at a certain point of time before 1947 and they have been living in other countries now. They are called PIOs. OCI overseas citizen जुड़ा कहूँ हमें they were earlier citizens of India. They were citizens once upon a time after 1950, but now they are no more. They are living in other countries with foreign citizenship. And NRIs are Indians, but they are staying abroad for not less than 182 days, and they are called NRIs. So they have they are full-fledged citizens of India. They enjoy all the political social rights. So they are not OCIs and PIOs. So for this scheme, 2015 re one OCI card launch कराई 2015 re by merging the PIOs and OCIs. NRIs are there, so these are called the persons government different programs, different plans भी करिछि तो सेमान को attract करिया पे integrate करिया पे India सहित so that revenue will be generated and a strong bonding, universal bonding of India will be established. This is the reason. So there are three kinds of foreigners जोड़ा हम कहूँ three kinds of persons except citizens. One is PIO, persons of Indian origin. Another is OCI, overseas citizens of India. And another is NRI. Okay. So we have completed this part. Now we shall move to fundamental rights. Fundamental rights are the very basic rights of human beings. Without fundamental rights, a man cannot be said to be a human being. So human rights basic rights जोटा मानवर मटेरियल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल तापरे हमरो कोन पर्सनल ग्रोथ पई दरकार हुए मटेरियल फिजिकल मेंटल मोरल इंटेलेक्चुअल स्पिरिचुअल ग्रोथ पई दरकार ऑलराउंड ग्रोथ पई दरकार उटे मनुष्यर समानता अधिकार हैला कि स्वाधीनता अधिकार हैला कि शोषण विरुद्ध अधिकार हैला धर्मीय स्वाधीनता हैला एगुरा सब जदि न मिलिबो ताले व्यक्तिर भौतिक विकास बा बौद्धिक विकास हेई पारिबो नाही बोली जणा जाय सेति फंडामेंटल राइट्स आर बोर्न विथ पर्सन्स ताको हमें विभिन्न प्रकार मसल पावर और मनी पावर जार अच्छी से माने अन्य मानकटू से फंडामेंटल राइट छड़ाई नियंती जोटा मोनार्ची समय होउतला बा ऑटोक्रेसी समय होउतला किंतु डेमोक्रेसी रे समस्त को मौलिक अधिकार दिया जाउची अर्थात से मौलिक अधिकार न रहिले डेमोक्रेसी रही परिबो नाही तेन डेमोक्रेसी रो ब्लड बा लाइफलाइन हैला फंडामेंटल राइट्स एवं से फंडामेंटल राइट्स ता पार्ट 3 रे रखाइची एवं पार्ट 3 रे सेटा जस्टिसेबल राइट्स ता
एनफोर्सेबल राइट्स एवं तार विशेष गुरुत्व रही ताकू काढ़ी नेले संविधान गोटे माने टाइप रो गोटे ऑटोक्रेटिक डॉक्यूमेंट हेई पारे एवं सेटा डेमोक्रेसी रो मीनिंग न रही पारे सेतिपई फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 रे 12 टू 35 आर्टिकल पर्यंत अछंती 35 आर्टिकल पर्यंत 12 टू 35 आर्टिकल पर्यंत अछंती एवं से 35 आर्टिकल भितर हमर 6 प्रकार फंडामेंटल राइट कथा कुआइची एवं रेस्ट्रिक्शन फॉर आर्म फोर्सेस कथा कुआइची ओके तारी ऊपर क्वेश्चन गुरा छी देखिबा तो किए कहितले फंडामेंटल राइट्स बिलोंग टू द ह्यूमन बीइंग्स जस्ट बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग एटा किए कहितले फंडामेंटल राइट्स एबे प्राय तो कोटेशन आछि बहुत परीक्षा रे मु देखुची सेतिपई किछि कोटेशन मु ऐड कर दीछि क्वेश्चन रे तो मोर यूजफुलनेस पई तो फंडामेंटल राइट्स बिलोंग टू द ह्यूमन बीइंग्स एंड जस्ट बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग सेटा डेसमंड टुटू कहितले साउथ अफ्रीका रो गोटे फिलांथ्रोपर बा नेशनल लीडर डेसमंड टुटू कहितले जे फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स बिकॉज यू आर ए ह्यूमन बीइंग Which among the following article contains right to information? Right to information ta jadio gote directly is not a fundamental right under any article, but according to Supreme Court there is a provision for right to information under article 19 and 21. 19 और 21 रे दीटा जकरे अछि तुमरो information बेली सुप्रीम कोर्ट कहिछि सो ओनली 21 हबनी कि ओनली 19 हबनी तो बोथ ए एंड बी सो वन आंसर डी हो ओके 87 आंसर डी Right of carniopagous twin or co-joint twins are inherent in which of the following articles of the Indian Constitution? Carniopagous माने जोटा गोटे शरीर रे दुईटी मनीष बाजंती मुंड दीटा कि एंती जो रहउची जो ट्विन्स माने रहउछन दीटा मुंड गोटे शरीर तो से मानकर भी अधिकार अछि बेली सुप्रीम कोर्ट कहिछि एबे तो सुप्रीम कोर्ट रो कथा अनुसार आर्टिकल 21 रे राइट्स ऑफ कार्नियोपागस कथा रही ट्रांसजेंडर कथा कह जाओ राइट्स ऑफ ट्रांसजेंडर है राइट्स ऑफ कार्नियोपागस है राइट्स ऑफ स्ट्रीट वुमेन टू गिव बार्थ टू चिल्ड्रेन सेटा भी गोटे राइट्स तांकर तो एगुरा सब आर्टिकल 21 रे एबे इंक्लूड कराई आर्टिकल 21 रे एबे इंक्लूड कराई तो आंसर बी ओके तो किए कहिथिला जे एटा गोटे कोटेशन अछि एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया मस्ट रिमेंबर that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties किए कहिथिले जे every citizen of India must remember that he is an Indian and he has every right in this country but with certain duties. Who said this? Option A B.R. Ambedkar, option B Jawaharlal Nehru, option C J.B. Kripalani, option D Sardar Patel. Okay, so option D is Sardar Patel. और सरदार पटेल ए डेफिनेशन टा कहिथिले बाय जो वर्ड टा कहिथिले सरदार पटेल ए जिनसटा डी तो तुमे दीटा कोटेशन मु आज देइछि तुम पई काइंडली टेक ए नोट ऑफ दिस Okay, so the quotation gura mon rakhibo every citizen of India must remember that he is an Indian, he has every right in this country but with certain duties. Who said this? Sardar Patel. Which of the following articles contain right to life? Contains right to life in the UDHR. UDHR ta kono? Universal Declaration of Human Rights.
पिलाने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 मसीहा डिसेम्बर 10 तारिख दिन घोषणा कराइतला एवं सेतिरे मानवीय गुणगुड़िक मानवीय अधिकार गुड़िक उल्लेख कराइतला पाखापाखि 26-27 टा मानवीय अधिकार विषय उल्लेख कराई एटा विश्वर गोटे अंतर्जातीय डॉक्यूमेंट बा अंतर्जातीय पत्र जो मानव अधिकार गुड़िक घोषणा कराई डिसेम्बर 10 तारिख दिन से डिसेम्बर 10 को अंतर्जातीय मानवाधिकार दिवस बा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे हिसाब से पालन करा एवं से क्वेश्चन पचार को यूडीएचआर को आर्टिकल राइट टू लाइफ जमी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन राइट टू लाइफ 21 रे अच्छी सेमती यूडीएचआर केते अच्छी दैट इज आर्टिकल 3 सी ओके which of the following is not true with respect to fundamental rights of Indian constitution? They are justiciable, ठीक अच्छी, they are permanent and absolute, सेटा ठीक नुहे, तेणु आंसर सी हबो, कारण फंडामेंटल राइट्स रा परमानेंट नुहति कारण से मन चेंज ही परिबे अमेंड ही परिबे एंड फंडामेंटल राइट्स माने एब्सोल्यूट नुहति कारण ताकू रेस्ट्रिक्ट करि हबो एब्सोल्यूट माने कोन 100% तेणु फ्रीडम ऑफ स्पीच मोर अच्छी माने मो जा को इच्छा ता कहि दे परिबी जा विरुद्ध रे निंदा गुजब प्रति प्रचार करि परिबी सेटा तो ही परिबनी तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ता रेस्ट्रिक्ट रहउछ तो रेस्ट्रिक्ट किए करिवो पार्लियामेंट करिवो विभिन्न ग्राउंड रे संविधान रे भी रेस्ट्रिक्शन रखाई फ्रीडम ऑफ स्पीच को सिक्योरिटी ऑफ स्टेट डिफेमेशन कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मोरालिटी डिसिप्लिन ये सब ग्राउंड रे फ्रीडम ऑफ स्पीच को रेस्ट्रिक्ट कराई से फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट को अच्छे and fundamental rights are not permanent means they can be amended by parliament so baki ura thik achi they are found in part 3 they are basic human rights thik achi so 91 answer is C then 92 which of the following is not true with respect to fundamental rights of the Indian constitution they are justiciable they are permanent and absolute eta tam kale अच्छा who among the following termed article 32 of the Indian constitution as the heart and soul of Indian constitution एटा तुम जानी थी भलो भारे बहुत पिला B.R. आंबेडकर सी जे कहिथिले आर्टिकल 32 टा होची हार्ट एंड सोल काइना आर्टिकल 32 बळरे गोटे साधारण लोक तार फंडामेंटल राइट वायोलेशन पई सुप्रीम कोर्ट रे अप्रोच करि पारे जेतु आर्टिकल 32 is a fundamental right and its main objective is to protect other fundamental rights सेति पई ताकू हार्ट एंड सोल को आइतला कारण सी जदि न रहिबो 32 न रहिले फंडामेंटल राइट्स रो गुरुत्व रहिबनी फंडामेंटल राइट्स न रहिले संविधान रो किछि मर्यादा रहिबनी सेति पई ताकू B.R. आंबेडकर हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहितले तापरे 93 Which article of Indian Constitution ensures that state cannot discriminate against a citizen on the basis of religion, race, caste and sex and place of birth? कोटा non-discriminatory articles अच्छी sex and place of birth सेटा होचे article 15. Article 15. Okay, article 15 is the C. Which of the following is not correct regarding fundamental rights? Fundamental rights are justiciable. Right form of cooperative society is a fundamental rights. Fundamental rights are contained in Article 12 to 35. Fundamental rights cannot be amended. It a bhul achi karan can be amended. Got it? So it a sardova session da au ketata question achi. Which of the following article says that all the laws inconsistent with provisions of the part 3 shall be void? कोथरे कोहाइची definition of law कोथरे अछि जे कोनोसी law जदि fundamental rights से तो inconsistent रहला अर्थात against कला तल ताकू void declare करा जो अर्थात illegal declare करा जो सेटा आर्टिकल 13 अछि एवं से आर्टिकल 13 ता ही जुडिशियल रिव्यू पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट बा हाई कोर्ट जार व्यू 13 टा होची से जो जुडिशियल रिव्यू पावर से एग्जामिन करे गोटे लॉ को बा गोटे एक्शन को एग्जामिन करे देखे प्रकृत रे कॉन्स्टिट्यूशन वायोलेट होची ना नहीं सेति काइंडली रिमेंबर दैट 13 कंटेन्स द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ द जुडिशियरी
Which of the following article contains right to equality? এটা 14 ରୁ 18 এটা তুমি ସବୁ ପିଲା ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବ ତଥାପି এটা ଗୋଟେ क्वेश्चन. Which of the following is incorrect? Right to equality 14 ରୁ 18 ठीक अछि, right to freedom ठीक अछि, right against exploitation भी ठीक अछि. Cultural and educational right 29 31 अछि, এটা भूल अछि, এটা 30 ହେବ. ତେଣୁ आंसर करिबा केते सी डी डी এটা बी. All right, our question ଅଛି, please stay with me, we shall finish this part. Then 98, which of the following is not a right to freedom provided under the article 19? Not a right to freedom. Freedom to form union, association, cooperative society ଗୋଟେ freedom ଅଛି, right to move freely ଅଛି 191 D रे, right to settle 191 E रे, right to travel abroad is not a freedom that is provided under 19, it is provided under article 21. विदेश जीवार यात्राटा 21 रे अछि, देश भितर बुलिबार यात्रा करिवार अधिकारटा स्वाधीनताटा 19 रे अछि. Consider the following statement. Article 20 of the Constitution of India states that no person can be convicted for any offence except for the violation of law in force at the time of commission of the act changed as an offence. So it ex post facto law कहउछंदी, एटा ठीक अछि. Article 21 of the Constitution lays down that no person shall be deprived of his life, personal liberty except according to procedure established by law. According to procedure established by law. तमाने दीटा को ठीक अच्छी, तेणु आंसर हम both 1 and 2 C. Next question 100, question number 100. The provision of suspension of fundamental rights during national emergency is provided under. Provision of suspension of fundamental rights during national emergency is provided under 358. एटा किंतु 358 टा केवल आर्टिकल 19 सस्पेंड होआ पे कुआइ जाओ एतरे तो ऑप्शन 359 नाही तो सेटा. Which of the following envisages as being part of the right against exploitation in the Constitution? 23-24 रे prohibition of traffic in inhuman beings जीवो, abolition of untouchability टा 17, एटा protection of interest of minorities एटा नो, protection of employment of children एटा हो. तो 1 and 4 आंसर C. दीटा तो आर्टिकल है 23-24 गोटे चाइल्ड लेबर गोटे ह्यूमन ट्रैफिकिंग तो 101 के आंसर है 102 टा होची an individual cannot be forced to be witness to himself or herself, self incrimination, no self incrimination. This provision has been provided in which of the following articles of the Indian Constitution? 20 रे अछि टा, the person cannot be forced to be a witness against himself or herself. That is 20 रे तक हमें कहूँ no self incrimination. Preventive detention is found mentioned in which of the following articles of the Indian Constitution? Preventive detention 22 C. Which of the following contains right to constitutional remedies? 32 right G question ura D. So it a B. Kindly take a note of this. Okay. So that is the things. Now question number 105. Which of the following is correct? Incorrect. Article 20 no double jeopardy ठीक अच्छी. 21A right to education ठीक अच्छी. तापर देखिवा कौन अच्छी. 21 right to privacy भी ठीक अच्छी. 33 suspension of fundamental rights when martial law इटा 34 होगा. इटा 34 होगा. तो 33 भूल अच्छी बाकी उड़ा ठीक अच्छी. तो आंसर D. 105 क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर D. 105 क्वेश्चन नंबर 105 आंसर D. 106 which of the following amendment act deals with right to property? तो right to property कोथरे abolish होईची 44th amendment रे C रे.
एवं इतरे 36 रे सिक्किम बिकेम ए स्टेट नहीं 42nd को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहती 52nd टा एंटी डिफेक्शन लॉ एडीएल तो आंसर सी 44th अमेंडमेंट रे राइट टू प्रॉपर्टी अबॉलिश होइछ 107 रे व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बार्ड फॉर द मेंबर्स ऑफ आर्म्ड फोर्सेस 33 रे जो रेस्ट्रिक्शन कराइछि आर्मी नेवी एयरफोर्स पारामिलिटरी फोर्स पुलिस इंटेलिजेंस सर्विसेज तांको पई जो बैन कराइछि सेते को आर्टिकल टा बैन कराइनी राइट टू वोट बैन कराइनी सी वोट दी परि द प्रोविजन ऑफ प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड लेबर इन एनी ऑक्युपेशन इज प्रोवाइडेड इन 24 एटा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अछि बी तो दैट इज द थिंग देन 109 and 1010 okay last questions in India right to convert to any religion is a fundamental right ebe fundamental right कराइछ केबे आर्टिकल 25 रे एटा रिसेंटली एडेड हेछि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गोटे केस बळ रे हादिया केस तो कहउछन्दी हादिया केस सेतरे फंडामेंटल राइट अंडर रे 25 रे राइट टू कन्वर्ट टाको ऐड कराइछ राइट अगेंस्ट ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज प्रोवाइडेड इन 23 बी so dear we have finished all the questions important questions to fundamental rights आउ जदि किछि क्वेश्चन था कोटेशन बेस्ड बा कोन था प्रीवियस ईयर देखि कि मु ताको नेक्स्ट क्लास रे डीपीएसपी से आनिबी वी शैल डिस्कस लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन द नेक्स्ट क्लास विल हैव फंडामेंटल राइट्स से किछि क्वेश्चन रहइबो डीपीएसपी फंडामेंटल ड्यूटीज रे रहइबो दरकार पड़ले प्रेसिडेंट रो किछि क्वेश्चन भी कवर कर देबा कारण वी आर टेकिंग लॉट ऑफ questions in a particular class so it will be easy to cover 2-3 chapters at a time okay so thank you for watching our classes and I hope you are being benefited to some extent for your examination and this initiative of Vanik is to be further expanded and students should be benefited in more and more number that is our objective okay thank you for watching us and wish you all the best for your future India view. Thank you very much.